Hey, good evening, all of you. I hope all of you are doing well. It's a pleasure again reconnecting with each one of you. And so here we are again. And today's session is on how to generate content for descriptive writing. तो देखो कंटेंट जनरेशन तो आजकल बहुत आसान है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है उससे, ठीक है। मगर हम जो यहाँ पे कंटेंट की बात कर रहे हैं वो है आपने जो सब्जेक्ट मैटर लिखना है अपने डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में, वो कहाँ से आएगा। सो वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ एनीथिंग रैंडम, वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग विच हैज सब्सटेंस एंड जो सब्सटेंस वाले कंटेंट होते हैं और हमारे जो टॉपिक्स हैं वो हमको उनके साथ कैसे रहना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. So welcome to the session today for descriptive writing. Let me introduce myself. I'm Divya Dubey and I am from Time. And Time से हम लोग ये live sessions आप लोगों के लिए लेकर आते. If you can come to our centers so that you can come and meet us. So you can also meet us in person. But these live sessions are for your convenience. कि आप बैठिए और घर पे बैठ के ये live sessions enjoy कीजिए. So let me just go to this. Here comes my. Now, when I talk of something very, very important, what is the characteristic of a good essay? Now, when I say essay, I just don't mean essay. Like essay एक बेसिक फॉर्म ऑफ राइटिंग है. वही एसेज जब बहुत बड़े एसेज हो जाते हैं तो वो आर्टिकल्स बन जाते हैं, और ऐसे ही चैप्टर्स अगर इंक्लूड हो जाते हैं तो वो बुक्स बन जाती हैं. ठीक है, दिस इज हाउ राइटिंग इज डन. Writing may begin with one sentence, then a paragraph, and then collective paragraphs becomes essays, and collective essays becomes articles, and then articles becomes books. Like this is how it all goes. Base is writing, and when I say what is the characteristics of good essay, as a as somebody जो एक कंपटीशन लिख रहा है, आपको ये बात समझनी चाहिए. मैं एक बार फिर से दोबारा से हम बात पे रिवाइज कर लेते हैं. In my last session, I told you that what is the intent of the institutions that are, you are applying for, like banks or management institutions. They are looking for essay writing. Why have they kept that essay writing in their, as a examination, like just to test you? Why? What is the reason why? Now the reason why is they are looking at a candidate who is clear in their thoughts. और यही क्लैरिटी को चेक करने के लिए देर इज डेफिनेटली एसेज. और ऐसे में इसीलिए मैंने सबसे ऊपर जो लिखा है कि योर क्लैरिटी ऑफ थॉट, वट एवर यू आर पिकिंग एज अ थॉट शुड बी कंप्लीटली क्लियर. आपका मैं फिर से एक बात और कह रही हूँ, लास्ट सेशन में भी मैंने कहा था कि फ्लारी लैंग्वेज इज नथिंग. लाइक दे आर नॉट लुकिंग फॉर वेरी फ्लारी लैंग्वेज. वो ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे कि आप बहुत ही शेक्सपियरन लैंग्वेज लिखने वाले हो या बिल्कुल ब्रिटिश लिटरेचर से आप कुछ पिक कर रहे हैं. you should use good vocabulary, you should use गुड ग्रामर एंड बट द थिंग इज आपके थॉट का जो प्रोसेस है वो पूरा क्लियर होना चाहिए. उनको पता चलना चाहिए कि आपका जो एक माइंड मैप जो आप अपने मन में बना रहे हो अबाउट दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, वो बिल्कुल क्लियर होकर आगे बढ़ रहा है कि नहीं. कोहेरेंस, नाउ दैट्स द वर्ड. इज योर थॉट कोहेरेंट? So they're looking for
coherence, a certain kind of coherence in your essay. This is what we're looking for. Looking for certain kind of coherence in your writing. Okay. दैट इज वन ऑफ द रीजन. पहले आप अपने माइंड में क्लियर रहिए कि आपको जो टॉपिक दिया गया है उस टॉपिक पर आपने जो लिखना है वो क्या है. ठीक है. अगर आपने उसके इफेक्ट्स, ऑब्वियसली कोई भी चीज़ होते हैं उसके, कोई भी टॉपिक अगर होता है तो आप उस टॉपिक के इल इफेक्ट्स, पॉजिटिव इफेक्ट्स, प्रोज कॉन्स, है ना, इसी टाइप से हम करके चलते हैं. तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि हमें उसमें कैसे आगे बढ़ना है. अगेन, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज अ वेरी क्लियर लैंग्वेज. जो मेरा पहले वाला पॉइंट मैंने आपको उस वक्त भी बताया, देयर इज नो फ्लैरी लैंग्वेज दैट्स रिक्वायर्ड. योर ग्रामर शुड बी गुड. आप अच्छे ग्रामर इस्तेमाल कीजिए और राइट ग्रामर इस्तेमाल कीजिए, करेक्ट ग्रामर. आप अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, फ्लैरी नहीं पर अच्छे शब्द, मगर लैंग्वेज आपकी क्लियर हो और कंसिस्टेंसी हो आपके लैंग्वेज में. जो आप कहना चाह रहे हैं वो एक टोन में आगे बढ़े. रेलेवेंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट, नेवर लूज द रेलेवेंस. आपका जो कॉन्टेक्स्ट है टॉपिक के साथ टिके होना चाहिए. वो टॉपिक से आप भटकने नहीं चाहिए. टॉपिक अगर आपसे पूछा जा रहा है, सपोज दे टॉकिंग अबाउट, से वी टॉक अबाउट एनवायरनमेंट के ऊपर कोई टॉपिक आपको दिया लिखने को, और आप उस एनवायरनमेंट से लेकर आप करते करते आप किसी तीसरे एंगल पे उसे लेके जा रहे हैं. मे बी से वी टॉक अबाउट डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ आप लेके चले जाओ. ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज का एक इम्पैक्ट हो सकता है ऑन एनवायरनमेंट, राइट, बट आप उसे किसी और पावर्टी की तरफ लेके जाओ. पावर्टी का एक इम्पैक्ट हो सकता है एनवायरनमेंट पे, पर पावर्टी कैनॉट टेक प्लेस in place of the topic environment, right? So it cannot overshadow it. Like कोई और टॉपिक आपके मेन टॉपिक को ओवरशैडो नहीं कर सकता. वो पार्ट हो सकते हैं उसका, बट वो ओवरशैडो नहीं कर सकता. ठीक. सो दैट्स कॉल्ड रेलेवेंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट. नाउ, वेयर टू पोजिशन योर आइडियाज. आपकी पोजिशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. आप किस पॉइंट पर क्या चीज पुट कर रहे हो वो आपको, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल, यू वॉन्ट टू टेक अप एन एग्जाम्पल फ्रॉम history, and the clarity of thought says that you want to take up an example from history and bring it to the present. For example, एक टॉपिक अगर ऐसे आता है, इंडिया एंड इट्स जर्नी सिंस 1947, तो आप 1947 की हम बात कर रहे हैं, यानी वी आर टॉकिंग पोस्ट इंडिपेंडेंस. तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि बीच में आपने 80s का कोई मुद्दा उठा लिया, फिर आप उसे 2000s के पॉलिटिकल सिनेरियो पे ले आओ और फिर आप वापस 1947 पे जाओ. दिस कैन नॉट हैपन. सो दैट these kind of topics have to begin with a certain positioning of ideas. Now, if I say that India and its growth post 1947, so you're talking about all the uh, all the things that happened to the country as India and how India has progressed in all these years, right? तो आपको पता है आपकी clarity of thought क्या है, flow of idea क्या है. You talk about India as an independent nation, talk about India with what kind of past it had, but then it had the beautiful future ahead. With all those years from 1947 to the present, what all India has done, what all India's position has been, how political parties have played an important role, how the citizens have played an important role, right? How the world now see India as, how the world saw India previously. वो सब करके आपका एक unity of ideas बनता है. You're all thinking about these ideas in one direction, right? So this is how your essays, a good essay, like these are the characteristics of a good essay, right? Now, let's do this. Wait, I think there is a issue with it. Yes, that is it.
Yeah, here it is. Sorry for this little technical glitch that happens. We should all be prepared for it. Now, this is the format. I'll just put my, when we say positioning of ideas and all, so my positioning also should be clear here. Let's have this formal, and so these are the types of essays that you would get. उससे पहले हम थोड़ा सा format discuss करेंगे, ठीक? So these are the formats and types of essays that you get in competitive exams. Now, the word is descriptive. Descriptive is definitely, describe something. So there's a situation, there is something, a topic. Again, you have to go descriptive way in that. Narrative is when you create a narrative around it. These are the forms of essays. One is like a narrative kind of essays. For example, India's journey since independence, जैसे मैंने आपको भी example किया, तो वो narrative type में आप उसको दे सकते हो, right? फिर argumentative आता है. For example, should men be given more paternity leaves, or maybe the similar paternity leaves like women in jobs? So argumentative hai, you have to put both the type of points there. And then there are expository essays, which are like very explanatory. You have to give them a lot of details and facts and all that, right? So these are the formats of essays that you get in competitions. Then we talk on the, ये एक बहुत important factor है कि these are the some kind of topics जो हम कहते हैं ना commonly asked topics. अगर मैं कैसे प्रिपेयर कर रही हूँ बैंक एंट्रेंस एग्जाम की, नाबार्ड है या आईबीपीएस है या एसबीआई है, ठीक है, या फिर let's talk on other management entrance exams, right? For example, these exams are there. तो ये कुछ common topics हैं जो इनमें से ही आपके essays पूछे जाएंगे. तो format आपका ज़्यादातर यही रहेगा, narrative type of essays, argumentative, expository type of essays. And उनके topics कहाँ से आते हैं? Topics are majorly environment, socio-political, current affairs, लेटेस्ट क्या चल रहा है, इंटरनेशनल अफेयर्स, इंडिया में क्या हो रहा है, हाउ इज इट अफेक्टिंग इकोनॉमी, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट? सो ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन व्हाई आई ऑलवेज से दैट प्लीज एंड प्लीज रीड, कीप रीडिंग, प्लीज कीप योर सेल्फ अपडेटेड, अब्रेस्ट विद व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड. न्यूज़पेपर आप रेगुलरली पढ़िए, एडिटोरियल्स पढ़िए. बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जहाँ से आप अपने यू कैन रीड आर्टिकल्स, ब्लॉग्स ऑन लेटेस्ट टॉपिक्स. आप एसेज भी पढ़ सकते हैं, पर चलिए एसेज तो कोई एक टॉपिक आपको दे रखा है तो पढ़ा है ना, पर ये सारी एडेड इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी? ये सारी एडेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी जब आप ज़्यादा रीड करोगे, राइट? सो reading is the key to write a good essay. If you are not reading, then you're doing a biggest crime. Then if you think that there is a magic wand और teachers आपको ये सारी चीज़ें हम आपको बता रही है, तो केवल तरीके हैं बताने के, लिखना और उसको मतलब ये तो केवल these are all outlines. We can just tell you, writing an essay is like, if you compare it, like if you take a metaphor like making a painting. So what the teachers are telling you, or what anybody on maybe YouTube or in the classrooms, whatever the teachers are telling you, they're just trying to tell you to how to make an outline of it. The colors are to be filled by you. That the colors are to be filled by you would mean that all the content, we can only tell you how to create it, but the creation has to be yours. So you have to fill all the colors there, right? So now we go. Now, few things you need to keep in mind before you begin writing, right? ये कुछ चीज़ें हैं. For example, if you are okay, let me annotate here. For example, if I just write here that topic, ठीक है? अब ये हमारा एक बेसिक नोशन है that
वी कैन टॉपिक हमारा दिया गया है, व्हेन यू से टॉपिक, डिफाइनिंग अ टॉपिक, सो every time I say that whenever you're writing, ये एक फॉर्मूला है जो which comes every time, and that actually goes every time. So introduction, body and conclusion. Okay, now when I say introduction, body and conclusion, mind it is not just for an essay or a letter, or and it's not only for a descriptive writing thing. It's always and every time this formula works for any kind of presentation. आप presentation दीजिए, आप किसी से बात कीजिए, आप इंटरव्यू में जाइए, आप ग्रुप डिस्कशंस कीजिए, ये एक ऐसा फॉर्मूला है दैट वर्क्स एवरीवेयर. इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन. ठीक है, आप अपना अपना किसी आप जस्ट अ सिंपल थिंग, अगर आप अपना इंटरव्यू में भी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो भी तो आप इंट्रोडक्शन एंड देन द मेन थिंग, द वट एवर यू आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट टॉपिक्स, एंड देन इन द एंड यू जस्ट सम अप अबाउट योर सेल्फ. सो दैट्स अ कंक्लूजन, राइट? एंड यही पैटर्न जो होता है वो हमारा ये पूरा पैटर्न चलता है. सो जब हम किसी भी चीज का इंट्रोडक्शन बोलते हैं ऑन द टाइटल, राइट, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग टू डू. सो ठीक है. सो नाउ व्हेन आई से इंट्रोडक्शन, राइट, लेट्स कम टू दिस पॉइंट. सो इंट्रोडक्शन में क्या आएगा? हम बोल रहे हैं कि हम कैसे जनरेट करें इंट्रोडक्शन, हम कैसे स्टार्ट करें इंट्रोडक्शन, राइट? सो इंट्रोडक्शन, यहाँ ये देखिए क्या लिखा है मैंने, इंट्रोडक्शन रिप्रेजेंट्स व्हाट इज गिवन इन द लैटर पार्ट ऑफ द एसे. सो इंट्रो आपका, इंट्रो में आप डेफिनेटली टाइटल को या टॉपिक को डिफाइन करते हैं और फिर उसमें कोई हिंट्स छोड़ते हैं जो आपके आगे आने वाले जो एसे में आपने कुछ पॉइंटर्स दिए वो आपने जो बताने उसकी आप हिंट छोड़ते हैं, एंड दैट इज हाउ इंट्रोडक्शंस आर गिवन, राइट? इसमें आपके जो मेन की आइडियाज है ना, कि आप क्या क्या इंफॉर्मेशन मैंडेटरी वो आप सब देने वाले हो. ठीक है, सो दैट्स हाउ इंट्रोडक्शंस आर डन. नाउ इवन बिफोर दैट you would think कि अब हमको कैसे, suppose you have a topic in front of you, right, and I tell you that write an essay of say 200 words and on this given topic. Okay, right. The point is that generally what I have noticed is आप इसको किसी भी क्लास में किन्हीं भी बच्चों के सामने दे दो, instantly they'll pick up their pen, paper and all, and they'll just start thinking, they would want to write it down, right? कुछ भी जो भी दिमाग में आ रहा है. So the problem is that why you have to pick up the pen instantly? Can you not just focus, close your eyes, focus on your topic, and do the mind mapping thing. Start brainstorming that this is the topic and how we got to go about it, right? तो उसके लिए क्या करना होता है कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, द टॉपिक इटसेल्फ इज द कंटेंट, है ना, टॉपिक के अंदर ही कंटेंट छुपा है. Another thing that you need to do is there is a method called spelt. Sorry, I need to. I hope you're able to see this, all of you. Yeah, here it is. The spelt. Now when I say spelt, now spelt ये एक तरीका है आप अपना कैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं. ठीक है, पहला चीज, टॉपिक इटसेल्फ इज द कंटेंट. सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू ब्रेक द टॉपिक. आई थिंक लास्ट सेशन में वी स्पोक ऑन दैट. आप टॉपिक्स को में से मेन आइडिया कीवर्ड्स निकालते हैं, कीवर्ड अप्रोच भी. अगर आपको तो यू कैन सी द प्रीवियस सेशन, एंड प्रीवियस सेशन में आई टोल्ड यू ऑलरेडी अबाउट इट. आई एम जस्ट ट्राइंग टू गैदर ऑल योर previous thoughts and we're just revising on this. So keyword approach,
कंटेंट में जो टॉपिक है, टॉपिक का ही जो मेन कीवर्ड्स हैं उसमें ही कंटेंट छुपा है। फिर एक मैंने आपको बताया था कोडर, विच इज कलेक्ट, इट्स एन एक्रोनिम विच इज कलेक्ट, ऑर्गेनाइज, कलेक्ट आइडियाज एंड ऑर्गेनाइज योर आइडियाज, develop your ideas, express your ideas, and then review your ideas. This is how it happens. Now, अब हम आते हैं इस पर, spelled, because now you got to write an essay. So spelled would always help you. Now please remember, when we say S is for socio political. Socio political. Now socio political as in uh, or it can also be socio cultural. So socio political, anything which is related to the society and how it is affecting the politics, or either way the politics is affecting the society, right? Socio-cultural, how the society is affecting the culture, or the culture is affecting the society, like for a particular topic, that's been given, right? Then it is, this is, do you have any political agenda associated to it? This is a societal angle to it. Any topic would have a societal angle to it, right? So society, society and political, that can be a combined thing, but not just society, socio-political, socio-cultural, all that goes here. P stands for political agenda. Is it inspired by a political agenda, or is the topic, uh, are the stakeholders major politicians or decision makers? So all that for the topic it's required, or has any government, or are there any government norms that are connected to that given topic? All that goes in the political agenda thing, right? Then you have E is any economic angle to a topic, like if any angle may have a economic angle or also or not, right? So find out, does this particular topic has an economic angle to it? Is it contributing to the economy? Is it being benefited by the economy? Or anything, the changes that may happen in the given topic or in the given subject may create an impact on economy. So all that goes with, and then comes the L, that is a legal angle. Is there a legal angle associated to it? Any angle that is by the law associated to it? Now that goes with the L words, right? That's the, and then we have T, that stands for technical angle of it. So any kind of a technical angle associated with it, like maybe, if I, for example, if we have a topic like, say, the impact of AI in on future generations. अब ये तो we know that इसमें maximum impact technology का है, there's a technical angle associated to it, right? And then may come social, and then also may come political angle to it, right? So all that, uh, so what happens is, अगर आप देखोगे तो ज्यादातर सारे टॉपिक्स में कहीं ना कहीं ये सारे एंगल्स इन्वॉल्व होते हैं, मगर not necessarily every topic would have all five of them. They may have two of it, जो major impactful होते हैं. You may have three of them, you may have four of them, but this technique is going to help you develop your ideas. मतलब आपको समझने में थोड़ा सा आपको, it will help. और इसका मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल आपको देती हूँ. फॉर एग्जांपल, जैसे राइट एन एसे ऑन काउ. अब ये काउ वाला जो एसे है, ये बचपन से आप लोगों ने सबने किया होगा, ठीक? एवरीवन मस्ट हैव डन दिस. और मे बी से जस्ट राइट 120 वर्ड्स का सम एसे ऑन काउ. अब आप बोलोगे कि ये कैसा, मतलब ये दिस इज अ वेरी वियर्ड थिंग, काउ के ऊपर कौन है, तो हम क्लास 5 में लिखा करते थे. अब क्लास 5 में जो ऐसे लिखने का था, वो क्लास 5 वाले ऐसे तो सिंपल से हुआ करते थे भाई, एज एन एनिमल आप उसको
एक्सप्रेस कर रहे हो भाई, गाय की चार टांगे हैं, पूंछ है, ये है, वो है, और वो घास खाती है. This is a 5 year, a fifth class, fifth grader or a fourth grader would write. But if it is given to you, what are you going to write? Are you going to write in the same way? No, you can't write in the same way. What you need to do is you need to understand that now your knowledge on cow has improved and increased. Basic. Why am I giving you this thing? So they connect to it. Socio cultural impact. Cow ka. Connect to the socio cultural. There are societies where cow is considered holy. There are societies where cow is, um, eaten as food. सो है, सोशल कल्चरल कनेक्शन है. कैसे एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी को इम्पैक्ट कर सकती है, राइट, अपने अपने मे बी अपने अपने बिलीव्स की वजह से. मगर सोशियो कल्चरल इम्पैक्ट इसका है, यस, इन सम रीजन्स, इन सम कंट्रीज, एंड कंट्रीज लाइक आवर ओन कंट्री इंडिया, cow is considered to be the most sacred animal. And not just this, it इसका mention history, माइथोलॉजी, फिलोसफी, सब जगह इसमें हुआ है, राइट. और अगर हम इसका हिस्टोरिकल एंगल डालें यहाँ पर, चलो हिस्ट्री को लेके चलते हैं, क्योंकि कल्चर से ही हिस्ट्री बनी है. तो हिस्ट्री पर अगर चले जाएंगे तो पता चलेगा कि भाई काउ हैज़ बीन वन ऑफ द फर्स्ट 3 एनिमल्स टू बी डोमेस्टिकेटेड. कैसे सेटलमेंट्स पे काउ. तो आपके पास कितना सारा कंटेंट जनरेट हो जाता है जब आप एक छोटे सिंपल टॉपिक पे भी सोचना शुरू करते हो. फिर आप उसका पॉलिटिकल एंगल अगर सोचते हो तो क्या हो सकता है पॉलिटिकल एंगल. थिंक अबाउट the the banning of cow slaughterhouses, the illegal cow slaughterhouses, right? And talk about how, um, in some of the states, some of the governments, the state governments in our country, they kind of banned cow as, like, the slaughtering of cow. So all that, then gorakshaks and other things can come in, right? All that. फिर अब इकोनॉमिक एंगल करते हैं. अब देखो इकोनॉमिक एंगल जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है काउ का. काउ एक मिल्क एनिमल है. सबसे ज़्यादा व्हेन वी टॉक ऑफ डेयरी, काउ इज द फर्स्ट एनिमल दैट कम्स टू योर माइंड. व्हेन यू टॉक ऑफ डेयरी, you talk about how dairy products are being, like how India is contributing to the world, when we talk about um, dairy products and all, right? And then you think of something like Amul. When you talk of white revolution, then you talk about Mr. Vergiscurian, right? And then you're talking about all this, you're talking about cooperative. Don't you think you have so much to write about a simple topic like cow, right? So you can just think about writing and then you can go on and on. Now the point is that, uh, फिर आप उसका टेक्निकल टेक्निकल चलो टेक्निकल, लेट्स सी व्हाट इज टेक्निकल एंगल एसोसिएटेड टू इट. टेक्निकल एंगल क्या हो सकता है भाई. काउ इज द ओनली एनिमल जिसका पूरा, द स्किन इज आल्सो यूज्ड, द मीट इज आल्सो यूज्ड. There are some countries where the meat is used as beef, and then you say milk is also used. Even the cow's bones are used in some kind of medicine and all that, right? ये हो गया टेक्निकल एंगल. यू डोंट नीड टू राइट ऑल दैट इन डिटेल, बिकॉज आपको आपके वर्ड लिमिट भी देखनी है. 200 वर्ड्स है. आप पिक करेंगे, मैंने लिखा था, आपको बताया था, आपकी पोजिशनिंग ऑफ आपके आइडियाज कहाँ होंगे वो आपको देखना है. तो आपको, जब आपने शुरुआत करी विद द सिंपल टॉपिक लाइक काउ, एंड उसके आगे कुछ नहीं था, देन नथिंग, काउ. मगर जब आपने उसको इस एंगल से सोचना स्टार्ट किया दैट दिस एंटायर टॉपिक में हैव all these angles associated with it, you can think of so many things, right? And this is how your your essays take shape. And then you introduce, and then you put the body. You want to put 2 or 3 paragraphs, you divide it in the word limit. Intros, if it is a 200 word thing, you can have an intro of 30 to 35, 40 words, and then have 3 paragraphs as body, and then another 30 वर्ड्स का आपका एक कंक्लूडिंग पैराग्राफ हो गया आपका एक बढ़िया ऐसे तैयार. आपने उसकी बॉडी में, आपको पता है, आपने सोशल कल्चर का एक बना दिया, एग्जाम्पल दे दिया, फिर आपने मे बी से इकोनॉमी एंगल डाल दिया, उसका डाल दिया. तो आप चूज करोगे, आपके पास अच्छे एग्जाम्पल्स अगर आपके पास हैं, आप वो वहाँ पर डालिए, एंड दिस इज हाउ योर एसे वुड टेक शेप. So you see, you have to have a clarity of thought there. And
Spelt always helps you when we talk on uh, writing an essay or writing a content, right? So here we go. Yeah. Okay. So I hope all this is clear, and now I have just brought this सैम्पल ऐसे फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है? ये एक सैम्पल ऐसे है और हम इस सैम्पल ऐसे को अभी डिकोड करेंगे। अब आप अगर आप ये सैम्पल ऐसे को आप देखो, ठीक है? जस्ट डिकोड दिस, लेट मी जस्ट सी हाउ मेनी पीपल आर वाचिंग। Okay, I got this, Anamika. I just saw your message. Yes, there is app. We would also give you our numbers, and you may connect to us, and we'll be happy and we'll be glad to help you. And if you're from Dehradun, you can connect with us anytime. अगर आप देहरादून से तो कभी भी आइए मिलने के लिए, and we'll sit and we'll just discuss one on one also with you. Along with that, कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं आपको दूंगी, वो आप आगे भी यू कैन टेक इट, राइट? सो मैं ये इसलिए लेकर आई हूँ एक टॉपिक आप सबके लिए, ताकि हम इसको थोड़ा सा इसका एनालिसिस करें, राइट? अब द टॉपिक इज इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन आवर प्लानट। ये एक बड़ा सा बेसिक टॉपिक मैंने पिक करा, ठीक है? क्लाइमेट चेंज का एक इम्पैक्ट है हमारे प्लानट पर। अब हम इसको अपनी मेथोडोलॉजी से थोड़ा सा डिकोड करेंगे, ठीक है? नाउ आई सेड यहाँ पे कीवर्ड्स क्या है? इम्पैक्ट, इम्पैक्ट ऑफ, impact, okay? Climate change, and then we go for our planet. See, so the topic itself is a content, okay? Now you pay attention to this. We say, what are the keywords here? Obviously, impact, climate change, and our planet. Impact से ज़्यादा important topic क्या आया? Climate change. Out of the three, climate change. Now, when we talk of climate change, do we think of positive things? No, we don't. We always have the negatives in mind, right? So we know that our essay would take, it will progress towards going towards negative and the impact it's creating on the planet. तो वो जो चीज़ें हैं वो नेगेटिव की तरफ फॉर श्योर जाएंगी, ओके? अब वो आपको देखना है कि वो आपको कितना आगे नेगेटिव की तरफ लेके जाना है, बट कंक्लूजन कैन नॉट बी नेगेटिव, राइट? यू नीड टू गिव सम सॉल्यूशंस फॉर द कंक्लूजन, राइट? सो क्लाइमेट चेंज की जब मैं बात कर रही हूँ, हम बात करते हैं कि क्या 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 हो सकता है क्लाइमेट चेंज में ना, रीजंस है ना। तो फिर अगर आप इसको स्पेल्ड के तरीके से करोगे तो फिर आपको सोशल सोशल कल्चर पॉलिटिकल ये सारे एंगल्स आपको डालने हैं। बट पहले हम ये देखेंगे कि इम्पैक्ट यानी उसका असर क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज का असर क्या हो रहा है हमारे प्लानट पे। नाउ देर इज आवर प्लानट, वो अर्थ भी कह सकते थे या वो भी कह सकते थे ऑन द प्लानट अर्थ, ऐसे भी लिख सकते थे, बट आवर प्लानट लिखा तो यहाँ क्या है, एक पोजेसिवनेस आ जाती है अबाउट आवर प्लानट। दैट मीन्स दे आर ऑल्सो कनेक्टिंग द डॉट्स टूवर्ड्स योर इमोशनल साइड ऑफ द प्लानट, लाइक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द प्लानट, राइट? तो आप जब अपना प्लैनेट बोलते हो तो उसको आप कैसे डिकोड करोगे? दैट माय प्लैनेट, आवर प्लैनेट, अर्थ, दिस इज ओनली प्लैनेट देयर इज लाइफ, राइट? एंड we as humans, when we talk of humans are the most responsible as well as also responsible for the climate change. So there are responsible species, yes, because they're very intelligent, but they are also responsible for the climate change. Now you see how this impact is being caused by the humans on the planet. So we'll be talking on all. So we know that आगे हमने चल के क्या बात करनी? We are not going to talk on, definitely not going to talk on what अदर एनिमल्स तो इसमें इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे हैं, बल्कि इनफैक्ट अदर एनिमल्स आर बीइंग इम्पैक्टेड बाय दिस, है ना? तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो गई? हमारी ही हो गई। रिस्पॉन्सिबल हम ही हैं और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी।
तो देखो इसका इंट्रोडक्शन कैसे आएगा, यहाँ पर अभी मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, ये यहाँ पर this is the introduction for it. Now, when we talk of first, it is defining climate change. How we have defined climate change. यहाँ आ गया, केवल क्लाइमेट चेंज एक कंट्री रिलेटेड इशू नहीं है, इट इज अ ग्लोबल इशू. सो हमने उसको यहाँ पर मार्क किया, इट इज अ ग्लोबल इशू. ठीक है, क्योंकि इन्होंने आपको क्लाइमेट चेंज बोला. क्लाइमेट चेंज कभी भी कंट्री रिलेटेड नहीं होता, या नेवर रिस्ट्रिक्टेड टू अ कंट्री, राइट. एंड इसके इम्पैक्ट्स हैं, और वो क्या है, सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं. और वो जो सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं, क्योंकि आगे आप जो वही अभी बात हुई थी ना कि इंट्रोडक्शन में आप कहीं ना कहीं वो हिंट देते हो जो आगे जाके आप अपने एसे में लिखने वाले हो, या किन किन टॉपिक्स के ऊपर आप अपने एसे में इलैबोरेट करने वाले हो. सो विल बी टॉकिंग ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर्स. सबके क्या हो गए, वेदर पैटर्न्स चेंज हो गए हैं. ये तो सबसे हमको पता चल रहा है कि जहाँ पर पहले गर्मियाँ नहीं होती थी, आज वहाँ टेम्परेचर सोरिंग हो रहे हैं, राइट. टॉक ऑफ यूरोपियन कंट्रीज where just this year we saw that there was a high rise of temperature, right. We are talking of the weather patterns have changed, जहाँ मानसून जिस मानसून है वो थोड़े और एक्सटेंड हो रहे हैं, डीलेड आ रहे हैं, राइट. तो these are something that we would want to cover up in our thing. So the introduction would have all these pointers marked, right. अब ये अर्थ हिस्ट्री आ गई, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक पूरा टाइमलाइन के साथ हम इसको कवर करते हैं, ठीक है. बट अगर हमने हिस्ट्री से स्टार्ट किया तो वी हैव टू ब्रिंग इट टू द प्रेजेंट वर्ल्ड टू टेल यू, क्योंकि इम्पैक्ट उसका हम लोगों को हो रहा है, राइट. कहीं ना कहीं हम ये भी बता रहे हैं कि क्योंकि बहुत पहले से ये सब चेंजेस शुरू हो गए थे, जो हमारी प्लैनेट है उसके ऊपर असर अब दिखना स्टार्ट हो रहा है, लाइक वी आर सीइंग इट नाउ. एंड व्हेन वी टॉक ऑफ दिस, वी से unprecedented changes. Now what you see here, we have not used any kind of flowery language, but we've used very befitting vocabulary, okay. Not very high profile vocabulary, very befitting vocabulary. क्या लिखा, unprecedented changes. Unprecedented changes that have never happened before, okay. There have been cases of tsunamis and all, but tsunami and everything they have nothing to do with climate change, okay. ये सब चीजें होती, earthquakes they always happen. Earthquake is not a part of climate change. तो ये unprecedented नहीं है. but unprecedented क्या हो सकता है कि जिन जगहों पर टेम्परेचर ज़्यादा नहीं थे वहाँ टेम्परेचर बढ़ गए, जहाँ पर बर्फ़ पड़नी चाहिए थी वहाँ बर्फ़ नहीं पड़ी. हिमालयाज के जो स्नो पीक माउंटेन्स हैं, now they started to melt. तो आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें आ रही होंगी, okay. So keep those in mind, start creating a blueprint. Okay, I can cover this up, I can cover that up. So and all this because of our planet, we say they have been attributed to human activities, because somewhere down the line we know that in our essay we are going to hold the humans responsible for these climate change, है ना. ये तो हमारे को पता है. तो हमने कहीं ना कहीं एक वो हुक डाला कि all this have been largely attributed. Now we are using very right vocabulary for it. Rightly attributed would mean because of, or maybe being, we are giving because of the reason why. What is the reason why? We know that it's because of the human activities, right. And then we're talking about that this essay explores the impact of climate change on various aspects of our planet, including natural ecosystems. You know that अगर climate change होगा तो कहीं ना कहीं ecosystems affect होंगे, तो हमें वो लाना है. We have to bring to our notice. We cannot say that, instead of saying that okay the plants are affected, the animals are affected, or the birds are affected, we use good terms like we are impacting all the natural ecosystems, right. We are impacting the weather patterns, we are also impacting human health, and then we are impacting the economic sector. So you know that in the essay we have covered all these topics, ठीक है. केवल इकोसिस्टम को, ये तो होगा ही, इकोसिस्टम को इफेक्ट करेगा ऑब्वियसली. चेंजिंग क्लाइमेट चेंज इफेक्ट करेगा, यस करेगा, ठीक है. मगर आगे चलकर और क्या असर होने वाला है, आपके इकोनॉमिक पैटर्न को भी ये असर कर सकता है, ठीक है. दिस इज हाउ
it would go. Now, okay, so now we go in for, अब ये देखो कि हमने अपने जो इंट्रोडक्शन हमने अपना दिया, अब हम बात करेंगे कि वेदर चेंज क्या है और उसके पैटर्न्स कैसे बदले, एक्सट्रीम इवेंट्स कैसे हुई, राइट। हमने निकाला कि, क्योंकि हमने वो 3-4 पॉइंटर्स पहले डाल दिए थे ना, तो पहले हमारा आ गया ये वाला पॉइंट, है ना। अब हमारा ये पॉइंटर आया कि हमने अनप्रिडिक्टेबल वेदर इवेंट्स हो गई, है ना। और क्या अनप्रिडिक्टेबल वेदर इवेंट्स हुई, अगर मैं आपको बोलूँ, सोचो अपने क्या 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 अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है। जैसे हम बात करें गर्मी बढ़ गई है नॉट, मगर गर्मी बढ़ गई तो गर्मी बढ़ने से क्या होगा, बारिशें डिलेड हो गई, बारिशें डिलेड होने से क्या हो गया, पानी नदियों में कम हो गया, नदियों में कम हो गया तो क्या हो गया, सूखा पड़ गया, राइट। तो ऐसे क्या है, आप उसके इम्पैक्ट सकते हो, क्या हो जाता है, ड्रॉट्स, हीट वेव्स, हरिकेन्स, फ्लड्स, ये सब इंक्लूड करा है हमने इन द चेंजिंग पैटर्न। एंड यू सीन दैट जहाँ पर कभी बारिशें नहीं होती थी वहाँ बारिशें हो रही हैं, यू सीन दोज एग्जांपल्स, राइट। जहाँ कभी फ्लड्स नहीं आते थे वहाँ फ्लड्स आ रहे हैं, दिस टाइम यू सीन दैट देयर वाज अ फ्लड in most parts of Pakistan, or floods, you always have floods in high rise floods in श्रीलंका। अभी श्रीलंका में भी अगर आप देखो, अभी रिसेंटली कितनी ज़्यादा हैवी रेन्स हुई हैं, तो उस रेन, ये एक ऐसा पैटर्न है कि कभी ऐसा देखा नहीं है कि दिसंबर में कभी ऐसे नवंबर दिसंबर के टाइम पर ये हो रहा है, ठीक है। देयर इज अ ला नीनो और ला नीना इफेक्ट, एल नीनो, बट ये सब ठीक है, दैट इज देयर। द पॉइंट इज द क्लाइमेट चेंज इज गेटिंग, द क्लाइमेट पैटर्न, वेदर पैटर्न इज चेंजिंग, राइट। सो ये देखो, वार्मर ओशन वाटर्स एंड राइजिंग सी लेवल्स, और ये क्या है, ये कहाँ से इंफॉर्मेशन निकाली, ये इंफॉर्मेशन आपने पढ़ी होगी ज्योग्राफी में, आप लोगों ने बहुत सारी ज्योग्राफी पढ़ी है, तो आप लोगों ने ये कहीं ना कहीं रजिस्टर किया होगा। तो जितना ज़्यादा आप ये सब चीज़ें पढ़ते हो, आप कहीं ना कहीं वो चीज़ रजिस्टर करते हो, ठीक है। और फिर जब आपको कुछ लिखना होता है, तो फिर आप अपने सारे थॉट्स को अलाइन करके उन्हें जहाँ पर इस्तेमाल करना है वहाँ लाते हो। दैट्स वाई पोजिशनिंग ऑफ योर आइडियाज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नाउ okay, so we said, then we talking about, so अब आपने अगर ये सब लिखा, फिर आप इसके साथ एग्जाम्पल्स दे सकते हो। जैसे आई गेव यू दिस एग्जाम्पल ऑफ द एक्सट्रीम floods in Sri Lanka, and Pakistan was affected, right, all this, बांग्लादेश was affected। तो ये सब आपने एग्जाम्पल दिया कि देखो अभी ये इस मौसम पे ऐसा होता नहीं है, बट इट इज हैपनिंग। फिर आपने लिखा सी लेवल्स, फिर उसके बाद बोला कि they cause immediate destruction but also long term economic and social challenge. So what you're doing is you're leaving the hook for another topic, that is how climate change is affecting, would affect you economically. You get it? तो आपने यहाँ पर अपना एक हुक फेंका, क्योंकि आगे का पैराग्राफ आप आगे कैसे इंटरकनेक्टेड होगा, क्योंकि आपने कहा है इकोनॉमिक एंड सोशल चैलेंजेस हैं, तो वो हमें पता है कि नेक्स्ट पैराग्राफ में आप उसके बारे में बात करेंगे कि इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हो सकता है। नाउ हैव अ थॉट इन योर माइंड कि कोई जगह पर बाढ़ आ गई, किसी जगह पर अभी जैसे हम इफ आई टॉक अबाउट उत्तराखंड, वी आर फ्रॉम उत्तराखंड, सो वी नो दैट हमारे उत्तराखंड में इस बार बहुत ज़्यादा डिवास्टेशन था, देयर वर ह्यूज फ्लड्स, and also in the mountainous regions. Now, how can that impact economically? Of course, it can. I mean, सड़कें बंद हो गई हैं, सड़कें टूट गई हैं, आपके पास ट्रांसपोर्टेशन इफेक्ट हो गया, थिंग्स कैन नॉट गो, जो लोग वहाँ पर फंस गए हैं उनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो रहा है, यहाँ से टीम्स उनको बचाने नहीं जा पा रही है ना। उधर से अगर कोई उधर पूरा का पूरा, अगर हम, जस्ट टू गिव एन एग्जांपल ऑफ दैट, जैसे थराली उत्तरकाशी में जब ये फ्लड्स आए, तो वहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ किसान जो हैं वो सेब के बागीचे हैं उनके, और टूरिज्म है उनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है। नाउ ऑल दैट हैज हैपेंड, सो टूरिज्म गॉट इफेक्टेड, है ना, क्योंकि इतने लोग उसमें दब गए। आगे आने वाले टाइम में भी टूरिज्म, लाइक पीपल वुड बी स्कैर्ड ऑफ गोइंग टू प्लेसेस लाइक दैट, या उनके अपने होम स्टेज थे जो उन्होंने अपनी सब जमा पूंजी से बनाए थे, वो सारे के सारे बह गए।
जितने उनके सेब के बागान थे वो सारे खत्म हो गए। तो जो वो सोच रहे थे कि अब हमारी एक फसल होगी, हम जाकर उसको मंडी में बेचेंगे एंड देन वील अर्न एंड देन द एंटायर, क्योंकि सारे साल तो सेब होते नहीं है, देयर इज अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर। सो इट अफेक्ट्स द इकोनॉमी ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। तो एक जगह की इकोनॉमी फिर आगे इम्पैक्ट करती है। भाई अगर वहीं के लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा तो वो आगे अपनी क्या खरीद वो बढ़ाएंगे, राइट? सो one affects the other and the other and other, and this is how we say we have economic and we also have social challenge, right? This is how you need to think about it. Let's see. Okay, now here we go. So we say climate, we say these इकोनॉमिक एंड सोशल। हमने ये वाला टॉपिक लेना क्योंकि हमने उस पैराग्राफ में ये वाली बात की। तो इससे अब यहाँ पर हमारे कौन से सेक्टर्स इफेक्ट होते हैं, अब यहाँ से आप सोचना स्टार्ट करो क्या इफेक्ट होता है। एग्रीकल्चर, मैंने आपको एग्जांपल दिया, हराली जैसी जगह पर सेब के सारे बाग नष्ट हो गए, ठीक है। तो फिर कौन कौन सी फिशरीज, टूरिज्म, जैसे perfect example of the Uttarakhand calamity. All that are affected. Tourism, all this is included, right? So then you say that जो आपका जो आपका क्लाइमेट चेंज है वो आपकी जगह का के वेदर को चेंज कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वेदर और क्लाइमेट में फर्क होता है। वेदर इज द करंट थिंग, लाइक डे टू डे इट चेंजेस, बट क्लाइमेट इज like winters, summers and all that, right? Now what you say that it's affecting, of course it is। आपका फूड पैटर्न खराब कर देता है। जो वहाँ पे चीजें उग रही हैं, जो 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 खेत खलिहानों में जो जिस प्रकार की फसलें उग रही हैं वो उसको खराब कर देता है, इम्पैक्ट करता है उसको। तो जब वहाँ सारा पैटर्न ही चेंज हो जाएगा तो फिर आगे उसकी वो लोग जिस चीज पर डिपेंडेंट है उनकी आगे इकोनॉमी कैसे चल पाएगी, है ना। और एग्रीकल्चर तो सारी जगह का बेसिक है ना, किसी भी चीज की प्रोस्पेरिटी के लिए, किसी भी चीज की इकोनॉमिक्स के लिए एग्रीकल्चर is the basic, like food is the basic, agriculture is a part of it, fishery and other thing, but yes it's the basic। अच्छा, फिर यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी, अगर सी लेवल में चेंजेस आएंगे, क्योंकि अगर क्लाइमेट इम्पैक्ट होता है सबसे पहले सी लेवल पे चेंजेस आते हैं। अगर सी लेवल पे चेंजेस आते हैं तो फिशरीज इम्पैक्ट होती है, एंड यू नो दैट फिशरीज हैव अ ह्यूज मार्केट इन द एंटायर वर्ल्ड, एंड बहुत लोगों का घर चलता है, मतलब ह्यूज इम्पैक्ट, लाइवलीहुड अफेक्ट करता है, फूड सप्लाई, फूड सप्लाई चेन अफेक्ट हो जाती है, ठीक है। फिर आप टूरिज्म, हमारा थर्ड पार्ट है, थर्ड पॉइंट है टूरिज्म। ऑब्वियसली कोस्टल रीजन्स में लोग जाते हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से आप नहीं जा पाते हो, एंजॉय नहीं कर पाते हो एंड ऑल दैट। आप यहाँ पर एक और चीज मैंने मेंशन की है, स्की रिजॉर्ट्स इफेक्ट होते हैं, ऑफ कोर्स। लाइक कमिंग फ्रॉम उत्तराखंड, आई नो दैट उत्तराखंड में तो टूरिज्म काफी like it's a very important part of the livelihood in the higher mountain regions। A place like example, a place like Oli, which is known for its ski destination, ठीक है, वहाँ पे स्की फेस्टिवल्स होते हैं, स्कीइंग फेस्टिवल्स होते हैं, विंटर फेस्टिवल्स होते हैं। क्लाइमेट चेंजेस की वजह से बर्फ कम पड़ी, बर्फ नहीं हुई, विंटर फेस्टिवल्स कैंसिल हो गए। तो ये सब आप देख रहे हो कि ऐसे सोचने में लगता है क्लाइमेट चेंज क्या है, ओ गर्मी पड़ गई, बड़ी बड़ी गर्मी हो गई, मगर हम ये भूल जाते हैं कि उसके आगे का क्या इम्पैक्ट कहाँ होने वाला है। सो वहाँ बर्फ नहीं पड़ी एंड बिकॉज ऑफ दैट द विंटर फेस्टिवल्स गॉट कैंसल्ड, राइट, इन प्रीवियस ईयर्स, एंड बिकॉज विंटर फेस्टिवल्स गॉट कैंसल्ड ऑल द बुकिंग्स गॉट कैंसल्ड, क्योंकि पहाड़ों में लोग आते टूरिस्ट हैं कि भाई इस सीजन में आएंगे, बर्फ पड़ेगी एंड विल बी देयर। So you see how much impact a climate change thing affects lives, right? How much challenges. Now you see, and they these are the challenges, and वो challenges केवल ये challenges नहीं है कि फिर आगे societal challenges भी आ जाते हैं उसमें, ठीक है। तो चलो quickly हम इसको करते हैं। Let's see, नहीं, not this।
देन वी हैव दिस ऑल्सो ह्यूमन हेल्थ कंसर्न कि भाई अगर आपके पास फ्लड्स आ जाते हैं या आपके पास कोई भी कैलामिटी हो जाती है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, सपोज क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड और भी एक्टिविटीज होती है, फ्लड्स तो होते ही होते हैं, किसी जगह का टेम्परेचर चेंज हो गया एंड ऑल दैट, एंड बिकॉज ऑफ विच देर आर some diseases that take place. So there are also certain vector-borne diseases. ठीक है, डेंगू, मलेरिया। तो ये जो सोसाइटल चैलेंजेस है, सोसाइटी में जो चैलेंजेस आते हैं ये, अब आप ये देखो कि कंक्लूजन में क्या आने वाला है कि भाई कुछ चीजें हैं जो क्लाइमेट चेंज जैसी चीजें जो हम ही ने क्रिएट करी है, ह्यूमंस एक्टिविटीज के कारण हुई है ना, रीजंस क्यों, और अफेक्ट किसको सबसे ज्यादा कर रही है, ह्यूमंस को ही कर रही है, एनिमल्स को भी ऑब्वियसली करेंगी बट सबसे पहला उसका जो फ्रंट लाइनर्स है वो ह्यूमंस ही होते हैं। ठीक है, तो ये दिस इज हाउ इट गोज कि फर्दर मोर द स्प्रेड ऑफ vector-borne diseases such as malaria, dengue is expected to increase, climate bombs posing new health risks and all that, right? So so this is one, then you have this economic and social impact, right? And then you have, then you come to the conclusion of it. So you come to the conclusion of it, you see that, yeah, so you see that you know how this entire thing is affecting our future, because अब कुछ चीजें आप आगे के लिए भी छोड़ते हो, कंक्लूजन इज नॉट जस्ट इट एंड्स हियर, अब सब सही है, अब एंड हो रहा है, अब सब सही है, ऐसा नहीं है। अब हमको कहीं ना कहीं बताना पड़ेगा कि हमें, अगर हम इन एक्टिविटीज पर, अच्छा फिर बीच में आप अपनी वो एक्टिविटीज डालेंगे कि क्या है वो ह्यूमन एक्टिविटीज विच, बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव स्पेस आई कुडंट यूज देम, बट यस दोज आर द एक्टिविटीज, माइनिंग हो गई, वो एक्टिविटीज, डिफॉरेस्टेशन हो गया है ना, या फिर यू नो पोल्यूशन है, और littering of garbage and irresponsible littering of garbage. These are one of the few of the reasons why this is happening, right? Now, what is the conclusion? The conclusion says that uh, when we say uh, it affects natural ecosystem, yes, जितना भी अभी आपने प्रीवियस पॉइंट्स में बोला है, आपको सारे पॉइंट्स को कहीं ना कहीं लेकर उसको एक कंक्लूजन में लेकर आना पड़ेगा, और फिर कोई ना कोई आपको एक सोल्यूशन भी देना पड़ेगा कंक्लूजन के साथ, जैसे कि सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस आप करें, है ना, देर इज अ टाइम टू एक्ट नाउ, इस टाइप की लाइंस अगर आप लिख रहे हैं, टू प्रोटेक्ट आवर प्लैनेट फॉर फ्यूचर जनरेशन, or you can add few more lines like if we would not wake up now, we would our generations would not be able to enjoy our this beautiful planet, or this is the only home that we have, we have no other home to go to. So all this, or maybe say we are finding life in Mars, but we know that it doesn't exist, and where we have, we should build that life here. So all these things you can build on that idea and then go forth with it, right? सो दिस इज हाउ नाइस गुड ऐसे। अब आप इसमें देखोगे तो बहुत कुछ भी फ्लारी लैंग्वेजेस नहीं इस्तेमाल करिए, आप वोकैबुलरी से बिल्कुल मत डरिए, अच्छी वोकैबुलरी धीरे धीरे आप लोग पिक कर लेंगे, एवरीथिंग हैपेंस स्लोली। तो प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए, मतलब स्टार्ट राइटिंग नाउ, इट्स नॉट लाइक आपको ऐसा लग रहा है कि बैठे बैठे सुन लिया या कर दिया, बहुत सारी कंटेंट है, भरा पड़ा है सोशल मीडिया, यूट्यूब, इन सबसे start practicing. The more you practice, the more you write, the more you think, the more you read, it is going to affect your writing skills also, right? Before I go, I just wanted to take एक मैं आपके लिए ये लेकर आई थी, I just wanted to try this. For example, that's the topic, हाँ, mental health awareness among youth. आप इसको, मैंने pointers लिख दिए हैं. I would want you to take this up as a writing hint. मैंने यहाँ hints डाले, you can take a screenshot, you can pause it or do whatever. पहले start कैसे करेंगे? Identifying mental health issues in youth. You have to write on it. I'm just giving you hints on that. Then you give some signs of mental health. क्या है mental health issues? क्या signs है? ठीक है? फिर what are the stigmas or the social pressures that are associated with mental health issues? What is this? Why is mental health issue a taboo topic that you don't want to talk on that, right? फिर ये the thing is what are the effects, इस ये जो taboo बना दिया गया है mental health को, इसके क्या effects हैं, क्या है, what, how can it impact us? Then we say that we have to create a very
अब आप उसके वो दोगे, उसके सपोर्ट में चीजें दोगे। अभी तक तो आपने इश्यूज बताए, मेंटल हेल्थ के ये इश्यूज है ना, फिर आप कहोगे कि वी हैव टू क्रिएट अ वेरी सपोर्टिव एनवायरनमेंट, हाउ कैन वी मेक इट बेटर, यानी मिटिगेट कैसे करना है। फिर आपने स्ट्रैटेजीज डिफाइन करी, फिर आप टेक्नोलॉजी की का रोल बताओगे कि कैसे क्या क्या चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट करती हैं, और कैसे टेक्नोलॉजी जो है बुरे तरीके से भी इम्पैक्ट करती है मेंटल हेल्थ को, और टेक्नोलॉजी के थ्रू ही मेंटल हेल्थ एंड उसके बारे में अवेयरनेस कराई जा सकती है ना। एंड देन यू काइंड ऑफ कंक्लूड दैट हाउ वी शुड सी, और हाउ द सोसाइटी शुड सी मेंटल हेल्थ, एंड हाउ सोसाइटी शुड डील विद इट, बिकॉज हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उससे आगे इम्पैक्ट होगी। ठीक है, तो यू, दिस इज फॉर यू पीपल, you have to do that. Write it, you can even send it to us, email it to us. Right, last time also I sent you my email id today. I'll put my email id here. It is divya.dubey @time for education.com। ठीक है, आप इसमें आप लिख के भेजिए, ये सारे हिंट्स मैंने आपको दे दिए, जस्ट राइट ऑन दैट, राइट नाउ। बिफोर आई गो, आई हैव ऑलरेडी टेकन अ लॉट ऑफ टाइम, so before I go, I am just leaving you with some of the topics here. These are some of the topics. Take a screenshot, try writing essays on this. अपनी लिमिट्स बढ़ाइए, 150 से 200 कीजिए, 200 से 250 तक लेके जाइए। ठीक है, पर लिखना स्टार्ट कीजिए, एंड यू गॉट ऑल दीज पॉइंटर्स। So next time I'll come up with letter writing format. So we'll be starting with the letter writing thing. But these are some topics. Please write, and I'll look forward for your essays and your mails. Mail it to me, and I'll correct it and I'll send back to you. Thank you so much, all of you. Have a great, great evening ahead. Thanks. ओ या मैंने एंड कर दिया। अच्छा, अभी इसका भी तो है। अभी क्या है